Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we should start new chapter number 3, that is dynamics. Up to now, before dynamics, we earlier discussed mechanics. Mechanics is that branch of physics in which we study motion of the objects, about how motion are produced. But the question raised is that how the objects are accelerated and other are not. क्यों चीज़ें कुछ चीज़ों में हमारे पास कुछ चीज़ एक्सेलरेट होती है, कुछ नहीं होती, कुछ चीज़ें डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, कुछ किस तरह मोशन कर रही है, किस तरह डायरेक्शन चेंज कर रही है. इन तमाम चीज़ों का आंसर हमें डायनेमिक्स में मिलेगा. क्या डायनेमिक्स हमारे पास क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक्स. So dynamics is that branch of physics in which we study motion of material object under the action of force. इससे before dynamics we study in kinematics, that branch of physics in which we study motion of the material object without concerning the force. But here we should concern the force. We should concentrate how the object are in motion, what caused the motion, and that cause is called what? Force is responsible for that motion. So we should study that things in the dynamics, that motion are produced, how the motion are produced, what is the cause behind that motion, and the cause is the force. For example, motion of buses, how the buses, how the motion occur in buses, because of there is a engine behind the in the buses which pull the objects, which pull the whole of bus. So cars produce what? Force. The engine is responsible, they are exerting the force. And the other thing is the bodies in circular cars. The cars, every objects, all objects which are moving in circular path, it is responsible because of there is a behind the cars there. What is the cause? That is force. And if you hit the nail with hammer with the help, now the nail doesn't go by itself, you should apply some things. There's something, the cause which pull the nail in the wall, that is called what? That is a force. So we should discuss that things in dynamics. But how? Because the main thing is the motion, and how motion is produced, that is force. So what now we discuss what is force. कि force हमारे पास क्या है. That is a physical quantity which move or tend to move, stop or tend to stop moving object. Or simple words, physical force is a kind of push or pull any object. Because ये हमारे पास ऐसी physical quantity है force, क्योंकि physical quantity which can be measurable, we have discussed in earlier. अब force भी हम measure कर सकते हैं, how much force we exerted. अब वो force वो चीज़ है जो किसी object को move करने या move करने की कोशिश कर रहा है. For example, if you pull something, that start motion. If you pull the any box, heavy box, they start motion. If you doesn't apply the force, the box doesn't start motion. If we ride on bicycle, the bicycle by herself, doesn't start motion because you are applying a force. If you apply the force, the bicycle should start motion. So that is called what? Force. Or stop or tend to stop. If something which coming, you can stop easily. If the ball is coming, you can stop the ball with the help of your foot. But if they are coming truck or motor car, you doesn't attempt to stop that because they are such high acceleration. How the acceleration is produced? Because you are applying a force, they start motion. Due to starting motion, their velocities are changing, acceleration is produced. So we call it what? Force. Or force is a kind of push or pull anything. फोर्स हमारे पास सिंपल किसी चीज़ को खींचना या दिखा देना. अक्सर आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ लिखे होते हैं डोर्स पे पुश और पुल. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इफ यू आई पुश दिस थिंग्स, द डोर शुड ओपन. नाउ यू पुशिंग, you are exerting a force, and because of exerting a force, motion is produced in that door. If you pull, you are exerting something, cause है, the door does not open by itself. You shall exert something, you start motion, and that thing is called what? Force. So this is simple, we call it what? Force. Now we have discussed types of forces, that how many type of forces we have. We have a lot of type of forces: nuclear forces, gravitational force, tension force, friction force, lot of things. But here we discuss two main things, that is contact force and non-contact force. Now contact force is that force which two objects interact physically with each other. If the two objects interact physically with each other, बाकायदा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मिले, फिजिकली टच करे, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं?
कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. जिस तरह आप शेकिंग हैंड करते हो तो यू शेक हैंड फिजिकली, योर वन हैंड touch other hands hand, so this is physically touch with each other, touching each other, we call it what contact forces. For example, they are tension force, friction force, normal forces. फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिक्शन फोर्स को देख ले, अगर आप एक धागा बांध दे, कोई मास ले ले, कोई भी बॉक्स ले लो, उसके साथ आप स्ट्रिंग के साथ बांध दे, तो स्ट्रिंग एंड दैट बॉक्स is physically attached with each other, touch with each other, we call it what contact forces. Now for example, we should friction force, as you know, if you walk on the earth surface, you should touch the earth surface, your feet touch the earth surface, physically touch with each other. Now you exerting force on the earth and the earth exerting force on you, so through this action and reaction you can move forward. So these are those few forces which are physically interact with each other, we call it what contact force. I told you na, if you shake your hands, so this is physically contact with each other, you physically meet with each other, your hand touch each other, one hand touch other hands, so this is called what contact forces. Just like this person is walking on the earth surface, so his feet is touching the ground, so this is called what contact forces. Or you can see the string properly touch the mass. We cannot say that a person is walking in air, so this is not contact force, because our feet does not physically touch with the ground, and how they can do, he or she will not be able to walk on in a space or surface. You can see in space you cannot walk just pulling your feet, जिस तरह हवा में आप गलाबाजी लगा रहे, कुछ भी नहीं कर सकते. So that are called contact forces. Now non-contact forces, two objects not physically interact with each other. The two forces does not exert force physically on each other. They exert force on each other but not physically touch with each other. वो फोर्सेस जो दूर दूर से एक दूसरे पर हमारे पास क्या फोर्स एग्जर्ट करे, वो हमारे पास क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, कोई बाल ले लो, आप उसको ऊपर की तरफ फेंको, ये ग्राउंड है हमारे पास, ग्राउंड, ये बाल है हमारे पास, ये बाल हमारे पास क्या करेगा ग्राउंड की तरफ आएगा. अब ग्राउंड क्या है, बाल बहुत जो हाइट पे है फर्स्ट फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से ग्राउंड क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस बाल पे, और ये बाल को क्या कर रहा है पुल कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. सो ये दूर से अर्थ ग्रेविटी इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, और हमारे पास बाल को जितना भी दूर लेके जाए आप, हमारे पास क्या होगा, वो अर्थ की तरफ आएगा, वापस ग्राउंड की तरफ आएगा. सो इस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप जिस तरह एक दूसरे के साथ मुसाफा करते हो तो फिजिकली टच करते हो. एक मुसाफा होता है दूर से, बस एक बंदा आ जाता है क्लास में, जिस तरह टीचर आ जाते हैं तो टीचर बाकायदा शेकिंग हैंड नहीं करता, बस टीचर क्या करते हैं, खड़ा हो जाते हैं, स्टूडेंट उसको सलाम कर लेते हैं, तो दूर से वो सलाम एक दूसरे पर मुसाफा एक दूसरे पर सलाम भेजते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, या कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, आप हेलो हाई करते हो, तो ये हेलो हाई क्या है, ये दूर दूर से हमारे पास एक दूसरे पे सलाम करना है. तो ये हमारे पास इसकी मिसाल क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की है. बस वो दूर से एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो, फिजिकल टच नहीं कर रहे हो, ये हमारे पास क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. जिस तरह मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्जेस एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे, या इस तरह मैग्नेट आप ले ले, एक मैग्नेट को आप दूर रखिए दूसरे मैग्नेट से, तो वो जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के फील्ड में आ जाए, फर्ज करें हमारे पास ये एक मैग्नेट है, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ये कोई ऑब्जेक्ट ले ले स्टील का बना हुआ है कुछ, जब तक ये हमारे पास जब आप ये स्टील या मैग्नेट आप इसकी तरफ नज़दीक लेके आ जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, और बहुत इसकी फील्ड में आ गए तो एकदम से ये खींच लेता है, दूर से ये खींच लेता है. तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. अब आते हैं हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स, कि हर चीज़ का यूनिट होता है. आई टोल्ड यू हर चीज़ की हम वो करते हैं, किसी एक ख़ास इकाई में उसकी पैमाइश करते हैं, वो हमारे पास के यूनिट कहलाता है. स्टैंडर्ड विच थिंग्स आर कंपेयर, जिसका हम मुआवजा करते हैं किसी चीज़ का, उसको हम यूनिट कहते हैं. तो यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन. न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उसने अपने नाम से, क्योंकि फोर्स पे उसने रिसर्च की मोशन के बारे में, न्यूटन ने हमारे पास 3 बेसिक लाज भी रिप्रेजेंट किए, दैट इज़ लाज ऑफ मोशन, न्यूटन लाज ऑफ मोशन. तो उसने अपने नाम से यूनिट दे, दैट इज़ न्यूटन. न्यूटन हमारे पास क्या, 1 न्यूटन क्या होगा, फोर्स
प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। कि हम अगर फ़र्ज़ करिए पेन है, ये इसका मास क्या है 1 kg, और इस पर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ और इस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस यूनिट ऑफ, जिस तरह हम मास को केजी में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर, इस तरह जो फोर्स है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। दिस इज़ ऑल अबाउट डायनामिक्स के डायनामिक्स हमें हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास फोर्सेस मोशन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किसकी मदद से, फोर्सेस की मदद से। सो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।